Let's start the session with the Dhvani of Om. Om. Focus on your breathing. Be in a comfortable position. Slow inhalation, slow exhalation. लंबी गहरी सांसें. अपनी सांसों पे ध्यान दें. Slow inhalation, slow exhalation. Inhale through nose. Hold for a second. Exhale through nose. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Comfortable position. Close your eyes. Focus on your breathing. Slow inhalation. Slow exhalation. Kindly mute yourself. Openness. Focus on your breathing. Slow inhalation. Slow exhalation. Inhale through nose. Exhale through nose. Deep breathe. अपनी सांसों पे ध्यान. During inhalation, focus on your belly button. Movement of your belly. Upwards, downwards during breathing. Focus on that. Slow inhalation. Slow exhalation. Let's invoke Lord Surya to help remove all the negativity within me right now. We invoke for the Lord Surya's blessings to get ourselves and my family free from all the lower negative emotions. जैसे सूरज की किरणें हम पे पड़ती हैं, फील कीजिए आपके ऊपर सन रेज आ रही है. All fear, worries, phobias, insecurities, all disintegrate and flush down deep into the Mother Earth. आपके पैरों के नीचे से, from the sole of your feet, roots are going down deep into the Mother Earth. जैसे पेड़ के नीचे से जड़ जाती है. फील कीजिए हर नेगेटिव इमोशन बॉडी से डिसइंटीग्रेट छिन्न भिन्न होके पैरों से धरती में जा रहा है. Lack of patience, lack of tolerance, lack of compassion, all disintegrate. Om Bhurbhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yo Na Prachodayat. All calcified ideas, superstitious beliefs, unable to view from others' viewpoint, tendency to believe things blindly, tendency to curse, wish bad for others, all disintegrate and flush down deep into the Mother Earth. Om Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yo Na Prachodayat. Tendency to blame others for our condition, unable to drop past, पुरानी बातों में बार बार जाने की आदत, पास्ट को बार बार रिपीट करना, unable to accept everyone as they are. जैसे हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, ये ना समझ पाना. Tendency to mislead others, tendency to lie, tendency to laugh on others' condition. Lord Surya, please disintegrate all this from my body. Om Bhurbhuva Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo
प्रचोदयात्। Any kind of pride, arrogance, lack of responsibility, tendency to dominate others or getting dominated by others, tendency to focus on past or present, tendency to focus on past or future, unable to live in present, unable to live in attitude of gratitude. जो आज हमारे पास है उसका शुक्राना फील न कर पाना, जो ब्लेसिंग्स है उसे फील न कर पाना, unable to forgive myself and others instantly. All this disintegrate and flush down deep into the Mother Earth with the blessings of Lord's. Om Bhurvhuva Swaha Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om. Thank you, Lord Surya. Thank you for burning all the negative emotions within me. Thank you. नमस्ते पोजीशन में हैंड। वो सभी लोग जो मुझसे किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं, चाहे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, नेबर्स हों, फैमिली मेंबर्स हों, मे ऑल दोज बी इन फ्रंट ऑफ मी। नमस्ते पोजीशन में हैंड। लेट्स फॉरगिव ऑल दीज पीपल। आत्मा नमस्ते। आई सैल्यूट डिविनिटी विद इन यू। मैं आपके अंदर के देवी तत्व को नमस्कार करती हूँ। सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जाने अनजाने हम सब से गलतियां होती हैं। We all are one. We all make mistakes during evolution. Please forgive me for all my mistakes, and I forgive you for your mistakes. आप मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करती हूँ। Blessing position में hand. May God's divine love, divine peace, divine bliss be with you, be with me. May God's divine love, divine bliss, divine peace be with you, be with me. आप अपनी राह पे खुश रहें, मैं अपनी राह पे खुश रहूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। May divine peace, bliss and love be with you, be with me. Cut, I release, I let go. आप अपनी राह पे खुश रहिए, मैं अपनी राह पे खुश रहूं। अपने सामने एक स्मॉल बॉल की फॉर्म में अर्थ को इमेजिन करेंगे। ब्लेसिंग पोजीशन में हैंड। विजुअलाइज कीजिए डिवाइन लाइट आपके टॉप ऑफ द हेड where we have our crown chakra, वहां से एंटर हो रही है, इन हाथों से निकल रही है, सामने अर्थ पे जा रही है। फील कीजिए पूरी अर्थ इस डिवाइन लाइट से, इस दिव्य रोशनी से भरती जा रही है। पूरी पृथ्वी पर दिव्य रोशनी की बारिश हो रही है। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके टॉप ऑफ द हेड से लेके नीचे तक ये डिवाइन लाइट उन्हें क्रॉस कर रही है। उनके अंदर के सभी नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, नकारात्मक सोच विचार धरती के अंदर समा रहे हैं। सभी के सभी चक्रास बैलेंस्ड हो रहे हैं। हेट्रेड लव में बदल रहा है, अशांति शांति में बदल रही है, गुस्सा प्यार में बदल रहा है। Where there is hatred,
let there be love. Where there is impatience, let there be peace, silence, calmness. Where there is anger, let there be calmness. Where there is sadness, let there be joy, happiness. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. Together, let light descend on earth. फील कीजिए आपके हाथ में सेंटर ऑफ योर चेस्ट, जहां हमारा हार्ट सेंटर है, हार्ट चक्रा है, वहां गुलाब के फूल खिल रहे हैं। फील कीजिए इस लविंग एनर्जी को इन योर हार्ट। ये लविंग एनर्जी आपके हाथों से निकलकर पूरी अर्थ पे जा रही है। एंटायर अर्थ इज फ्लडेड विद दिस लविंग एनर्जी। सबके हार्ट चक्रा बड़ा हो रहा है, सबके हृदय में प्यार भर रहा है। They all are radiating loving energy. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. सबके जीने का मकसद उन्हें मिल चुका है। सभी खुश हैं, सुखी हैं। From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve, let goodwill and will to do good descend on earth. Together, let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. पूरी पृथ्वी दिव्य रोशनी से भर चुकी है। नकारात्मक सोच विचार खत्म हो गए हैं। सतयुग आ रहा है, गोल्डन इरा आ रहा है। From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve, let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Third time, from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve, let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Fourth, from the point of light within the mind of God Brahma, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. May the great avatar return to earth. From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the holy masters know and serve,
let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out, may it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Point of light within the mind of God. Let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being, the purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Sixth, from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. From the center where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being, the purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Om. Last, from the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of every person, every being. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of every person, every being. Let love descend on earth. From the center, where the will of Lord Shiva is known, let purpose guide the will of every person, every being, the purpose which the holy masters know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out. May it seal the door where evil dwells. Let divine light, love, and power descend on earth and manifest the divine plan on earth. Om. Hands down. आप अपने सामने एक विजन बनाएंगे जैसे हमारे सामने टीवी स्क्रीन है. In the same way, think you have a screen in front of you. Make your vision, जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी आपकी डिजायर है, which you want to accomplish, वो आप अपने सामने विजुअलाइज करेंगे जैसे वो ऑलरेडी फिनिश हो गई है. फॉर 1 मिनट म्यूजिक इज ऑन. आप अपना विजन बनाइए. जो आपकी विश है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप कैसा फील करेंगे? मेक अ विजन, एड इमोशंस इनटू इट. अगर आप कोई पार्टी करेंगे, थिंक ऑफ अ म्यूजिक, स्टार्ट डांसिंग. सब कुछ अपने माइंड में वैसा ही इमेजिन कीजिए जैसा आप चाहते हैं. when your manifestation get materialized. The vision पॉजिटिव होना चाहिए. If it is related to health, विजुअलाइज कीजिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, डर्टीएस्ट वेदर में भी आप यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन डू ऑल योर गोल्स वेरी easy. If it is something related to relationship, imagine that
ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग, जिनके साथ भी रिलेशनशिप इशू है, देखिए उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पॉजिटिव विजन, laughing together, enjoying every moment together, sharing your emotions. If it is something related to anyone's marriage or job or exam clear, देखिए वो हो चुका है. You are looking for the result. For example, एग्जाम में आप रिजल्ट सर्च कर रहे हैं and then it's your name is there, your percentage is there, whatever you want. जॉब में आपका नाम आ गया है, इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू क्लियर्ड एंड देन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नेम है. इन केस ऑफ मैरिज, देखिए वरमाला डालते हुए उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, पहुंच जाइए उसके अंदर जैसे वो एक्चुअली हो रहा. एड योर इमोशंस, एड योर हैप्पीनेस, योर स्माइल. फ्यू मोर सेकेंड्स टू गो. अपने विजन में आपके फेस पे स्माइल, हैप्पीनेस, खुशी, म्यूजिक, सब कुछ होना चाहिए. कैसे इंजॉय करेंगे जो चाहिए जब वो मिल जाएगा. Hands on your laps, palm facing upwards. जिस भी गुरु, जिस भी गॉड, जिन्हें भी आप मानते हैं, उन्हें कहिए जो आज ब्लेसिंग्स की हैं वो मिलियंस ऑफ फोल्ड में हम सबके पास वापस आते हैं. May these blessings come back to me in millions of fold in the form of materialization of this vision. जो विजन अभी बनाया है इसके पूरा होने में ये blessings यूज हो. Thank you God. Thank you. Thank you all for joining the session. Let us end it with the Dhwani of Om. Om.